Well friends, now we have the next example over here based on certain things that we people have studied previously in previous lectures. Now, I'll be reading the question over here. Generating station has two alternators, one of 4 MVA 10% reactance and other is of 6 MVA 7.5% reactance. Circuit breaker is rated at 220 MVA. Now it is intended to extend the system. This was the previous system that we were having. Now it is intended to extend the system through a transformer of 10 MVA, extend the system by supplying it from the grid through a transformer of 10 MVA and 5% reactance. Two bus bar sections working on 33 kV are connected through a reactor. Find the reactance X of the reactor necessary to protect the switchgear if a short circuit occurs in the outgoing feeder connected to alternator bus bar. So now we are having a system and we want to find out what should be the value of this X. When the system was not there, circuit breaker was capable enough to deal with these two generators. But once when we extend our system, what happens? The severity of fault increases. Is it clear? The severity of the fault increases. Fault का severity क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. Fine. क्योंकि अब यहाँ पे fault supply करने के लिए you have a third element as well. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है बेटा? Fine. So now थोड़ा-थोड़ा पता चल रहा है? क्यों थोड़ा-थोड़ा? आपने जो आंसर पता है ना स्टार्ट किया तब से थोड़ा-थोड़ा पता चला. लाइक क्वेश्चन समझ में आया लेकिन आपने जो स्टार्ट किया ना तो वो प्रीवियस पहले ये नहीं था. फाइन. और सिर्फ अकेला सर्किट ब्रेकर ये दो जनरेटर के साथ कनेक्टेड था. तो दिस सर्किट ब्रेकर वाज केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग इफ एनी फॉल्ट इज अकरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फीडर विथ टू अल्टरनेटर्स. कारण कि सिस्टम मैंने हैव डिजाइन्ड फाइन, तब मैंने सोच के इतने एमवीए का सर्किट ब्रेकर रखा था. पता चला कि नहीं पता चला कि जो इन दोनों को सेट कर सके. क्लियर हुआ? फाइन. ये पता चला कि नहीं पता चला? नाउ अब मुझे जरूरत पड़ी कि ये फीडर जहां पे सप्लाई कर रहा है तो वहां पे बहुत सारा लोड है एंड समहाउ द लोड गॉट इंक्रीज्ड. लोड क्या हो गया? बढ़ गया. सो इन दैट केस दीस टू अल्टरनेटर्स आर नॉट केपेबल इनफ टू सप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ लोड. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा? तो आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा सप्लाई फ्रॉम द ग्रिड. तो जब मैं ग्रिड कनेक्ट करता हूं एंड इफ आई डोंट कीप द रिएक्टर तो क्या होगा? यहां से अगर फॉल्ट हुआ तो ये दोनों सप्लाई करेंगे ही करेंगे फॉल्ट को. ग्रिड विल बी एडिशनल वन व्हिच विल बी सप्लाइंग एंड ब्रेकर माइट नॉट बी दैट कैपेबल. बराबर. ब्रेकर का उतना कैपेसिटी ना भी हो. फाइन. तो हमने क्या किया? वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ रिएक्टर व्हिच इज अ करंट लिमिटिंग रिएक्टर. तो वो रिएक्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए कि जिससे यहां पे होने वाले फॉल्ट का सिवियरिटी कभी 220 MVA से बढ़े रहे. क्लियर हुआ? फाइन. पता चला कि नहीं पता चला? तो यहां पे होने वाला फॉल्ट मैक्सिमम 220 MVA तक का हो सकता है जो ये सर्किट ब्रेकर झेल सकता है. अगर इससे बड़ा फॉल्ट हुआ तो स्विच गियर, दिस इज अ स्विच गियर कंपोनेंट, इट विल बी डैमेज्ड. इज इट क्लियर? ये पता चला कि नहीं पता चला? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट लिमिटिंग रिएक्टर वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, विल बी फॉलोइंग द फॉर्मूला शॉर्ट सर्किट एनवीए इज एनवीए बेस्ड अपॉन XPU. नाउ विल बी फाइंडिंग द रिएक्टेंस, विल बी ड्राइंग द रिएक्टेंस डायग्राम. तो अल्टरनेटर का एक रिएक्टेंस 1 PU. फाइन. अच्छा, दिस इज 10 MVA, राइट? 4. So how do we calculate? So X new G1 is equal to 0.1 J.1 multiplied by new MVA कितना है? 10. 4. Guys, we have taken MVA base is equal to 10. Fine. So new MVA will be 10 MVA. Old MVA is 4 MVA. Even if we don't consider voltage, that's fine because the entire system that we have over here, it is working on the same voltage level.
So even if these two things are not given to me, I am okay with it. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Clear हुआ ये चीज? Fine, okay? Clear हुआ? Okay. So and as such voltage level is same, so it will get cancelled out. So this value is J 0.25. बराबर ना? Fine, okay. Now xg2 which is equal to J 0.75. 0.75. It is 0.75 multiplied by 10 divided by 6, which comes out to be J 0.125 pu. Fine. X transformer 10 MVA 10 MVA base है, so it is same base J 0.05 and x2 per unit में ही consider हो गया, so that's done. So we have got a system which is like this: xg1, xg2, this is a reactor, and here when you have a transformer, then we have transformer's reactor. Fine. So what do we have over here? Bus. Means it is also 1 per unit, voltage is 1 per unit, so I'll consider this is also 1 per unit. Is it clear? Because ultimately we have a voltage source there. Okay, so this is 1 per unit, this is 1 per unit. Fine. And the fault is occurring here. पता चला? This is grounded, or we can say that it is like this. Clear हुआ कि नहीं हुआ? The fault is occurring over here. So how the system will work? यहाँ पे when I have connected circuit breaker, what is the equivalent reactance that this circuit breaker will see? Okay? पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, वो reactance होना कितना चाहिए? So from this equation we can say that short circuit MVA, which is this, it is the severity of the fault. इसको क्या बोलते हैं? Severity of the fault. So short circuit MVA is equal to MVA base divided by XPU. तो पूरी सिस्टम का यहां से लिखने वाला पूरी सिस्टम का x कितना होना चाहिए? that I want to find. Short circuit MVA is 220 is equal to MVA base is 10 divided by XPU. So XPU which is equal to 10 divided by 220. So 1 divided by 22. So अगर मैं उसको रिएक्टेंस को J के टर्म्स में लिखता हूं, so XPU which is equal to J कितना आया ये? 0.045 के बाद कुछ है? 4545. हाँ, so we'll be writing it this way. 4 डिजिट तो आने ही चाहिए. Clear? Fine. Okay, so we got this. बेटा पता चल रहा है? Okay, so we have got ये this as J 0.25, J 0.125, J 0.05 and JX, which I don't know. Fine. Okay, sub 1 per unit है, so it is going to get connected together. So I'll be having a circuit which is like this. 1 per unit, 1 reactor, second reactor, third reactor, and this reactor is connected like this, and this is a system. This is grounded. मेरा circuits and networks का example हो गया boss. This is see an example. So what is equivalent reactance? So equivalent reactance is these two are in parallel, which is in parallel with the series combination of these two. पता चला कि नहीं पता चला? So I can say that x per unit equivalent इतना होना चाहिए, and what is the value that I have? What is the value that I have? So I have x equivalent is equal to this J 0.25. This is Jx equivalent if I write. So this is Jx pu. Fine. So J 0.25. It is in parallel with. It is in parallel with. मैं नीचे लिखता हूँ Jx equivalent, which is equal to J 0.25, which is in parallel with J 0.125, which is in parallel with series combination of Jx plus J 0.05. अगर मैं पूरी सिस्टम में से J निकाल दूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. तो मैं I'll be comparing it with this 0.04545. J नहीं लिखूंगा. पता चला? तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए. क्लियर? सब में से J, let's remove J. Fine. So I'll say that 0.04545
4545, it is equal to, what is a parallel combination? I'll write down again. It is 0.25 parallel 0.125 parallel x plus 0.05. Clear हुआ? What is this parallel? 0.8333 parallel with this. So parallel with x plus 0.05. Okay, which is 0.04545. It is equal to, I'll write it down this way, 0.08333 multiplied with x plus 0.05 divided by 0.08333 plus 0.05 plus x. What is this addition? Will you please tell me? So it is 0.08333x plus, and this multiplication. Somebody will tell me this multiplication. Addition is 0.1333. Pakka na? Plus x, and this multiplication is 0.0041656. Okay, that's fine. If we are able to take more values, that's fine with us. Okay, chalo. So we have got, we will be taking 0.04545 here. You multiply this, you have to calculate the value of x. So ये multiply हो गया. Multiply these two. What is the value? 0.04545 multiplied by this. Sorry, you tell me zero terms. 0.00606 plus 0.04545 x minus 0.08333 x plus, sorry, equal to 0.0041656. This is clear? पता चला ना? So this minus this कितना हो रहा है? और ये सामने ले जाओ, दोनों नेगेटिव हो गए ना, चलेगा, तो वो पॉजिटिव, मुझे इसका पॉजिटिव आंसर ही दो. कितना? x इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस में आएगा, पर वो पॉजिटिव में ही बता दो. Otherwise, let's write down minus. That's okay. This is where we are taking it this side. So 0.004 minus 0.006 is minus 189. That's it. Okay. So x is equal to 0.00189 divided by 0.03788. What is this value? 0.05. 48498. हाँ. J, sorry, 0.4989. 4. Okay. So that's, therefore X reactor is J 0.04989 PU. So this is my answer. Fine. Let's check whether we are getting this answer or not. 0.049, it's correct answer. Clear? Fine. So I hope you all have understood how exactly we can calculate such reactors which are current limiting reactors. Please write down.